All right, assalamu alaikum everyone. We are going to start the session now. So today we are going to be doing two papers from May-June 2021, paper 3 variant 2 and paper 3 variant 3. These are the two papers that we plan to do in our today's session, inshallah. Now, from this paper 3 variant 2, we will be doing these questions. So again, as we normally do, since we're not going to do these complete papers, I've chosen the questions that are relatively more complicated from these two papers, so that we can at least discuss the more difficult questions. But baki aap inshallah kar sakte hain. So from this paper 3 variant 2, we've got these questions that we're going to be doing. Questions 2, 4, 8, 10, and 11. ये 5 questions यहाँ से इस paper से हम कर रहे होंगे. Again, I've chosen them based on what most candidates found difficult in this paper according to the examiner report, and also some on my own judgment जो थोड़ा सा ज़्यादा complicated लग रहे थे. 2, 4, 8, and 11 ये हम इस paper से कर रहे होंगे. And then from the other paper, May-June 2021, paper 3 variant 3, we are going to be doing these 4 questions, question number 7, 8, 9, and 10. ठीक है, ये हम questions कर रहे होंगे इन दोनों paper से. Let's start with paper 3 variant 2. इससे start करते हैं. इसके हमने ये वाले questions करने हैं, ठीक है. Now, just a few points before we start. As you already know, you have to make sure that you show complete working in all your answers. Calculator से सीधे results निकाल के नहीं लिखने, उसका कोई फायदा नहीं है. You'll not get marks for that. And of course, in all of your working, your accuracy should be at least 4 significant figures. At least 4 significant figures. 4 significant figures से नीचे आप नहीं जाना in your working. ठीक है, so you've got to be careful about that as well. All right, so let's jump in right away and start with our first question. This paper, first question in modulus है, that's straightforward. Let's do the second one. It's complex numbers. A very short question on that, but you just have to draw a sketch here. और उस sketch पे आपको correct region shade करना है. Now, how do you approach such questions? A lot of people find this a bit tricky for some reason, but it's pretty standard. आपने क्या करना होता है? जो भी आपके पास ये दिया होता है, जो भी expression दिया होता है, you have to convert it to the standard form. Standard form क्या है? So this is modulus of this thing. आपने क्या करना है? इसको इस form में लिख लेना है. Z minus something. So something like this, Z minus some other thing. Okay, इस form में लिखें सबसे पहले. Right now we've got plus here. हम क्या करेंगे यहाँ पे? Minus common ले लेंगे. Minus common लिया तो अंदर क्या बचा? -1 plus iota. This is less than or equal to 1. That's the first inequality that we've got. We can write it like this. जब इस तरह से लिख लेंगे, what this statement now means is distance of Z from this point, ये जो point आपको नजर आ रहा है दूसरा, this is the point, -1 plus iota, that is less than or equal to 1. So that's how you understand this in words. इस statement का क्या मतलब है? जब आपने इस form में convert कर लिया, Z minus something, distance of Z from -1 plus iota has to be less than or equal to 1. ठीक है, तो पहले आपने इसको समझ लेना कि इसने क्या पूछा हुआ यहाँ पे. Okay, now let's look at the other inequality. इसमें क्या है? Argument of Z minus 1. Now this is already that form Z minus this number. That should be less than or equal to 3 pi over 4. Now what this means is argument of Z from the horizontal line drawn at 1, at this point 1, that is supposed to be less than or equal to 3 pi over 4. तो पहले तो आपने इसको सही तरह से समझना है इन दोनों statements का मतलब क्या है. And now you can draw that sketch. आप क्या करेंगे? Argand diagram आप कैसे बनाते हो? You've got real part on the x-axis, imaginary part on the y-axis. सबसे पहले हम वो grid बना लेते हैं यहाँ पे. So the grid is going to look something like this. And this is what we need there.
And now we first of all have to mark those points that we need. कौन से points हैं आपके पास? We know this is the imaginary axis, this is the real axis. Remember, जब भी आप ये बना रहे होगे, आपने दोनों axis के ऊपर scale same रखना है, otherwise आपके circle सही नहीं बनेंगे. Scale आपने equal रखना दोनों axis के ऊपर. ठीक है? Points देख लें आपको क्या चाहिए. 1 point चाहिए, एक -1 और +5 iota चाहिए. तो आपको बहुत बड़ा scale नहीं चाहिए. You can have a small scale. You can say this is 0. And then let's say this is 1, this is -1, this is 1, this is 1, and then you have 2 here, -2 here, and -2 here. Now let's look at the first inequality. कौन से point की बात हो रही है? -1 plus iota. Let's mark that point first. -1 plus iota point किधर आ रहा होगा? It's going to be right here. Now distance from this point should be less than or equal to 1. So basically क्या होगा? It's going to be a circle of radius 1 unit. उसके अंदर आप रह सकते हो. ठीक है? I would recommend that you do this drawing using a compass. If your hand drawing is not very good like mine, तो आप compass use कर लें. It's going to be easier. Otherwise अगर आप हाथ से reasonably good circle बना सकते हो, तो that's going to be fine. So if I were to make it like this is kind of okay. So it looks like a circle. और आपको नजर आ रहा है कि रेडियस जो है वो आपको 1 है यहाँ पे, so that's going to be acceptable. ठीक है? लेकिन अगर आप accurate बनाएंगे ना, इसके जो अक्सर अगले पार्ट्स आ जाते हैं कभी-कभी जहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन करनी होती है, if you do an accurate drawing, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, आपके लिए समझना आसान हो जाता है. But if it's recognizable, that's okay. This is a circle. ये आपके पास एक circle बन गया. You have to be inside the circle because distance from that point should be less than 1. इस सर्कल के आपने अंदर रहने, आपने रेडियस 1 का सर्कल बना दिया. ओके, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? You got this point 1. 1 point किधर है? 1 on the real axis, 0 on the imaginary axis. So that point is going to be here. Okay, that point is going to be right here. ये आपका point है. इस point से आपने angle measure करना है. It should be less than or equal to 3𝝅/4. Now, for most people, it's harder to think of in terms of degrees. So, इसको उसमें सोच लें, it's harder to think of in terms of radians. इसको अगर आप degree में सोचें ना, this is basically 135 degrees. 135 degrees. So basically, ये horizontal line से आप angle measure करें 135. So basically, left side के ऊपर आपके पास ये 45 degrees की इस तरह से line बन रही होगी. This is going to be 45 degrees, or you can say 𝝅/4, and this is 135 degrees. Horizontal axis से आपने 135 degrees से 3𝝅/4 का angle बना दी. ठीक है? Now you're not going to write degrees there, of course. आप लिखेंगे वही, but you can think in degrees if you want. जब आप draw कर रहे हैं उसको, so this is 3𝝅/4, and this angle is going to be 𝝅/4. So basically उस point से ये जो 1 point है, आपने क्या किया? 3𝝅/4 की line बना दी. अब देखें यहाँ से line जा रही है 45 degrees के ऊपर, तो ये कहाँ से pass करेगी? It has to pass through this point. Let me draw this slightly better. आप ruler से बनाएंगे, scale से बनाएंगे. I don't have a scale right now, so I can just draw it like this. ये आपकी इस तरह की line बन जाएगी. Now, what is going to be the region that satisfies both of those inequalities? So you have to be inside the circle. Circle के अंदर है ना आपने? Circle के अंदर हो सकते हैं. The angle has to be less than or equal to 3𝝅/4 from the horizontal. तो ये horizontal axis है. इससे जो angle बन रहा है आपका कितना है? It should be less than or equal to 3𝝅/4. So basically आप इस line के इस side पर होगे. इस side पर. Now what region satisfies both conditions? Circle के अंदर और line के ऊपर. That's going to be this part of the graph. ये आप shade कर देंगे. This is the region that satisfies both conditions. ठीक है? ये आप वहाँ पर region draw कर देंगे. Okay, that's okay. Let's erase that. Didn't work. Gotcha. Okay, so that's your shaded part. This is going to be your final result. ये आपकी final figure होगी. ये आपका final shaded region होगा. Okay, let's move on. Let's move on to the next one. So this is question number 4 from the paper. I hope that makes sense to everyone.
Okay. Question number 3 is relatively easier, simple linear law की application है. Question number 4. Let's think about this. ये tan inverse आपको recently syllabus में add हुआ है, so you'll not find a lot of questions in this in the past paper. So that's why it's important, and probably that's the reason a lot of people were not able to do this correctly in this particular session as well. उसने क्या कहा आपको? उसने कहा है using integration by parts, find the exact value of this integral. Now integration by parts हम product में use करते हैं. This is not even a product. This is not even a product. Right? Moin, let me come back to that. Let me come back to that after this question. इसके वापस आता हूँ दोबारा, ठीक है? अच्छा. Using integration by parts, find the exact value of this integral. अब integration by parts हम कब use करते हैं? Integration by parts हम use करते हैं product के केस में. ये तो product ही नहीं है. It's not even a product. So what do we do in this case? Remember log की integration कैसे करते थे? Log की integration में नहीं आती ना, directly तो नहीं हम कर सकते. तो हम इसको क्या करते थे? We would write it like this: 1 into log of x. 1 into log of x लिख देते थे, फिर integration में parts लगाते थे. Tan inverse के लिए we use exactly the same idea. What we do is we write this thing as 1 into tan inverse of half x. ठीक है? So we write it as a product like this. 1 से कोई चीज multiply कर दें तो उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. It's still the same thing, right? So you can write it like this. And now it's a product. Now it's a product. It's 1 multiplied something. So ये दो चीजें आ गई आपके पास. Now you can use the integration by parts formula. Let me write down the formula here on the side. Formula जो आपके पास formula sheet में दिया होता है, that's u into dv over dx with respect to x. That's equal to uv minus integral of v du over dx with respect to x. ये आपके पास formula दिया होता है formula sheet के अंदर. Now the first thing you have to do is you've got to choose what you're going to take as u and what you're going to take as dv over dx. हम ये कैसे करते थे? हमने एक thumb rule बनाया था इसके लिए. Of course we understand the logic for that as well, but यहाँ पे हम सिर्फ use करेंगे I8. जो लेफ्ट पे आएगा उसको dv over उसको u choose कर लेंगे, जो राइट पे होगा उसको dv over dx choose कर लेंगे. So what functions do we have here? We've got tan inverse of x. That's one function that we've got. Tan inverse of x यहाँ पे I8 में किधर आ रहा है? That's an inverse trigonometric function. ठीक है? 1 को हम normally क्या करते हैं? We can say it's x raised to the power of 0. We can consider it to be algebraic. जो लेफ्ट पे आ रहा है उसको हमने क्या करना है? u चूज कर लेना. जो राइट पे आ रहा है उसको dv over dx कर लेना. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे? tan inverse को हम चूज करेंगे dv over dx. सॉरी tan inverse को चूज करेंगे u और 1 को क्या करेंगे? dv over dx. The logic for that is हमें tan inverse का इंटीग्रल तो आता नहीं है, तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स में dv over dx को तो इंटीग्रेट करना पड़ता है v में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम tan inverse को u चूज करते हैं यहाँ पे. So that's the whole reason of applying integration by parts in the first place है कि tan inverse का डायरेक्ट इंटीग्रल में नहीं आता. तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं. And now we just apply the formula. हम इसके लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा अगर आप साइड पे इवैल्यूएट कर लें जो चीजें आपको चाहिए. We know that u is equal to tan inverse of half x. Okay, that's u. And what's dv over dx? dv over dx is 1. आपको फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए? आपको du over dx भी चाहिए और v भी चाहिए. वो इवैल्यूएट कर लें साइड पे. du over dx, let's figure that out. Now, how do you differentiate tan inverse? इसका आपके पास डेरिवेटिव दिया होता है फॉर्मूला शीट के अंदर. If you remember, tan inverse of x का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आपके पास यहाँ पे आ रहा हो, let me show that to you. Where was that? Tan inverse of x, tan inverse of x, tan inverse of x. Where did that go? अच्छा, this is integration, sorry. This is differentiation, yeah. So tan inverse of x का डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है 1 over 1 plus x square. इसमें क्या होता था? x की जगह पे अगर कुछ और आ जाएगा तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे. That's all we have to do here. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? Tan inverse of half x का डेरिवेटिव, that's going to be 1 over 1 plus half x का whole square. Okay, and then we multiply by the derivative of this thing. x की जगह पे half x आ रहा है यहाँ पे.
half x के derivative क्या होएगा? That's going to be 1 over 2. So we multiply by that. And now let's simplify this. इसको simplify करते हैं, हमें क्या मिलता है? We get 1 over 1 plus x square over 4. And we've got 1 over 2 here. इसको और simplify कर लेते हैं. नीचे अगर LCM ले लें, we end up with 1 over 4 plus x squared divided by 4. And we've got 1 over 2 here. 4 can go to the numerator. And we've got 4 divided by 4 plus x squared into 1 over 2. And that gives you 2 over 4 plus x squared. Now, I've done a lot of steps here. आप इसमें steps skip कर सकते हैं if you're comfortable. इसमें कोई मसला नहीं है. I've just done it so that it's clear for everyone. हमने क्या किया exactly. ठीक है. So tan du over dx आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास ये चीज आ गई. ठीक है. Now we also need v. वो भी evaluate कर लें यहाँ पे. dv over dx 1 है तो v क्या हो जाएगा? v is going to be integral of 1. That's going to be x. ये आपके पास आ गया जो आपको चाहिए था. You have u now. U is tan inverse of half x. You've got du over dx. ये आपको एक चीज चाहिए फॉर्मूला में इनपुट करने के लिए. You have v as well. That's another thing that you need to input in the formula. ये आपके पास यहाँ पे v भी आ रहा है. V is basically x. अब सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज इनपुट कर देनी है, and that's it. Let's input values in the formula. अच्छा, फॉर्मूला में क्या होता है? Let me write that down here as well, just for clarity. uv minus integral of v du over dx with respect to x. इसके अंदर values input कर दें. u की जगह क्या डाल दें? Tan inverse of half x. Okay. And then you've got v. What's v? V is x. इसको x से multiply कर दिया. Minus integral of v. What's v? V is x. Into du over dx. What's du over dx? That is 2 over 4 plus x square. इसको अब इंटीग्रेट करना है. ठीक है. तो पहला इंटीग्रल तो हमारे पास आ गया भाई. That is x into tan inverse of half x. Now we've got to integrate this thing. This is integral of 2x over 4 plus x square. How do we integrate this now? It's a fraction. Fractions को हम कैसे integrate करते हैं? We've got a couple of methods for this, or 3-4 methods for that. सबसे पहली चीज हम क्या सोचते हैं? Can the log rule apply here? Well, it looks like it can, because 4 plus x square का derivative क्या होता है? 4 plus x square का derivative क्या होता है? It's 2x, and we've got 2x in the numerator. 2x numerator में already पढ़ा हुआ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आप directly इसको integrate कर दोगे. We'll say this is x tan inverse half x. We've got the derivative of this denominator in the numerator. ये आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही है, जो फॉर्मूला शीट में भी लिखी होती है आपके पास. Let me just show that to you. It's this form. F dash of x over f of x. तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है? Log of the denominator ln of f of x, and that gives us ln of 4 plus x square. ये आपके पास आ गया. आप क्या करते हैं? अब लिमिट्स इनपुट कर दें. इसने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मांगी है. 0 और 2 लिमिट्स इनपुट कर दें इसके अंदर, and you'll get your result. Let's input 2 first. 2 input करते हैं तो हमें क्या मिलता है? When we input 2, we get 2 tan inverse of 2 over 2 minus ln of 4 plus 2 square. Okay. Now input 0. इसमें से subtract कर दें 0 वाला केस. जब 0 input करेंगे, first term तो 0 हो जाएगी. Why? Because we got x multiplying here. वो तो 0 हो गया. Minus ln of 4 plus 0, that's going to be ln of 4. And now we just have to evaluate this thing. 2 into tan inverse of 1. Tan inverse of 1 क्या होता है? Remember, आपने radians use करना है, degrees बिल्कुल नहीं use करना. Degrees नहीं use करना. Why? हमने ये decide किया हुआ है P3 के अंदर. Of course, we have discussed the logic of that as well. लेकिन P3 में क्या करना होता है? Trigonometry और वेक्टर्स के अलावा कहीं पे डिग्रीज नहीं यूज करना. ठीक है. रेडियंस यूज करना है. tan inverse of 1 क्या होता है? tan inverse of 1 in radians is pi over 4. So this is 2 pi over 4.
minus ln of 8 minus into minus, that's plus ln of 4. ये आपके पास आ गया. It's 2 pi over 4 minus ln 8 plus ln 4. That's okay, but generally the examiner likes कि अगर आपके पास log की terms आ रही हो ना multiple, you simplify them a bit. तो इसको simplify करके लिख सकते हैं. कैसे simplify करेंगे? You have 2, ये तो pi over 2 हो गया पहले. 2 pi over 4, that becomes pi over 2. This can be simplified. How? We can use the division law. क्या करेंगे? 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा. पहले इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी. प्लस ln 4 माइनस ln 8. तो अब क्या कर सकते हैं? हम इसको ये कर सकते हैं, जो पहले लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर में आ गया. सो वी गॉट डिविजन आउटसाइड द लॉग्स. तो लॉग के अंदर हमारी क्या हो जाएगी? वी गॉट सब्ट्रैक्शन आउटसाइड द लॉग. माइनस हो रहा है लॉग के बाहर, लॉग के अंदर आपकी डिविजन हो जाएगी. इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. इसको सिंप्लीफाई कर दें. That's pi over 2 plus ln of 1 over 2. And that's what you get. This is your final result in this case. ठीक है. यहाँ पे log term को आपने जरूर simplify कर देना. एक term आपने लिख देनी है. This is going to be fine. इसको एक और फॉर्म में भी कर सकते हैं, but this is going to be acceptable. आपने multiple log terms नहीं छोड़नी है. आपने इसको single log term में convert करना है. इवन दो उसने आपको नहीं कहा कहीं पे करने को, लेकिन अगर मार्किंग स्कीम्स में देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस में उसने कहा होता है कि आपको इवेंचुअली एक लॉग टर्म चाहिए. ठीक है. सो दैट्स योर फाइनल रिजल्ट हियर. नाउ दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. आई होप दैट मेक्स सेंस. लेट मी answer that question from Moin quickly before I move on. So that was the shading part. अच्छा, पिछले क्वेश्चन में देखें उसने क्या किया हुआ था. उसने आपको बताया हुआ है कि ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट माइनस आई प्लस आयोटा, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1. डिस्टेंस 1 से कम होना चाहिए एक पॉइंट से. तो या तो आपको पता है कि सर्कल आपका लोकस होएगा और आपको सर्कल के अंदर होना है. सो वी हैव टू बी इनसाइड द सर्कल. दैट्स वन थिंग. वी कैन बी एनीवेयर इनसाइड द सर्कल. सर्कल के अंदर होंगे यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, दैट्स वन थिंग. अब सर्कल के अंदर तो हो गया. दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है उसने? दूसरी कंडीशन उसने कहा है द एंगल फ्रॉम द पॉइंट 1 पे जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई उससे जो एंगल है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 पाई ओवर 4. तो हमने वो वाली लाइन बना ली 3 पाई ओवर 4 वाली. दैट्स दिस लाइन. दिस इज द लाइन. एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से. तो ये एंगल जो है ये 3 पाई ओवर 4 से कम होना चाहिए. कम एंगल कब होएगा? जब आप इस लाइन के ऊपर होगे, जब आप इसके इस साइड पर होगे. तो यू हैव टू बी अबव द लाइन, क्योंकि इस लाइन के नीचे जाके तो एंगल ज्यादा हो जाएगा ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस से. सो यू गॉट टू बी अबव द लाइन एंड इनसाइड द सर्कल. व्हाट्स दैट रीजन? दैट्स द शेडेड पार्ट जो मैंने येलो में शेड किया. दैट्स द रीजन दैट वी वर लुकिंग फॉर. ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस. मोइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है, ये आप कर सकते हैं. जब उसने एग्जैक्ट मांगा होता है ना, पोलर वाला मेथड नहीं यूज करना आपने सिंपल जो ये वाला मेथड होता है कि आप ये करते हो, स्क्वायर रूट्स को सपोज कर लिया a प्लस, उसने लिखा हुआ a प्लस आयोटा b, तो वही फॉर्म लिख लेते हैं. a प्लस आयोटा b, आपको इसका स्क्वायर शुड बी 10 minus 4 square root of 6 iota. ये वाला मेथड यूज कर लें, इसको एक्सपैंड कर लें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b. ओके, वो आपके पास आ जाएंगे. So that's a standard method. You can do that. This is also not that difficult. It's just simple. आप पहले cosecant को sin में convert कर लें, cot को लिखते हैं cos over sin, फिर वो identities apply कर दें या prove कर लेंगे, tan theta आ जाएगा. फिर आपको second part में integrate करना है tan theta को. remember कैसे integrate करते थे? tan theta को integrate करने के लिए we use sin theta over cos theta, और इसमें फिर log यूज कर लेते हैं. एक माइनस साइन अंदर लगाते हैं, एक बाहर लगाते हैं, और ये क्या बन जाता है आपका? ये बन जाता है माइनस ln cos theta. राइट, उसमें लिमिट्स इनपुट कर दें, you'll get that form. So that's an easy question. Question number 6. Question number 7, that's also not very difficult. It's a simple differential equation question. इसमें आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? उसने क्या कहा हुआ है? Gradient at a general point is proportional to this. Gradient क्या है? आपके यहाँ पे dy by dx, gradient dy by dx.
it's proportional to that, so it's going to be ky over square root of x plus 1. ये आपके पास equation बन जाएगी. You can find the values of k from this. K की value अभी तो नहीं आ सकती, आपको पहले इसको integrate करना पड़ेगा. You'll separate the variables. That's going to give you 1 over y dy. On the other side, you're going to have k over square root of x plus 1. इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, k into x plus 1 whole raised to power minus 1 over 2 dx. You integrate both sides, इनको integrate कर देंगे, आपके पास एक constant भी आ जाएगा, एक k होगा यहाँ पे, एक plus c भी आ जाएगा. उन दोनों की values कैसे निकलेंगी? आपके पास ये दो points दिए हुए हैं, एक दफा 0 1 input कर देंगे, एक दफा 3 input कर देंगे, and you'll solve that. You'll get y in terms of x. So that's not very difficult. You can try that. Let's move on. Question number 8. Let's look at this. According to the examiner report, this was one question. This was another question that was not answered very well by most candidates. Let's have a look at this. We've got the equation of a curve, and that is such that y equals e raised to power minus 5x into tan square x. ये आपके पास equation of curve. Find the x coordinates of the stationary points of the curve. You give your answers correct to 3 decimal places. Now, if you just look at this question statement, it doesn't really look that complicated. आपको simple क्या करना है? Stationary points निकालने हैं. So you should be able to do that relatively easier. आपने क्या करना है? Derivative निकालना है, 0 से equate कर देना है और उसको solve कर लेना है. But it's an 8-mark question. So let's see, there might be some complication. So करके देखते हैं. Let's see what we get. So stationary point chahiye. What do we do for that? We find derivative dy over dx. Now, how do you differentiate this? It's a product. इसका आपको product rule use करना पड़ेगा. Remember, if you want to differentiate u into v, इसका derivative क्या होता है? uv dash plus vu dash. Or I often write it like this: uv dash plus u dash v. एक ही बात है. That's the derivative that you've got to figure out. Let's apply the product rule here. U as it is. So what are we saying? What are we calling u? This is our u. Tan square x. This is our v. Achha, remember your notation. Tan square x का क्या मतलब होता है? Tan square x is the same thing as saying tan of x का whole square. So it's basically the power function that we've got. So let me write that first here, just so you don't end up getting confused. This is y equals e raised to power minus 5x into tan of x का whole square. Right? That's what the function actually is. Let's find the derivative. U as it is. So that means e raised to power minus 5x as it is into derivative of tan x का whole square. उसका derivative क्या होगा? पहले तो power function लगेगा. Power rule लगेगा because outer function is the power function. 2 आके multiply हो जाएगा by the function that's inside, that remains as it is. Power को 1 minus, power से 1 minus कर दिया. 2 में से 1 minus किया. You've got 1 there. And then multiply by the derivative of what is inside the power. Tan x का derivative क्या होता है? That is secant square x. ये आपके पास हो गया uv dash plus u dash v. यानी अब इसका derivative लेना है. इसका derivative क्या होगा? e raised to power minus 5x का derivative is just e raised to power minus 5x as it is. But then we have to multiply by the derivative of the power. E raised to power minus 5x का derivative क्या होता है? That is minus 5. That's the derivative of this thing. And then we have tan x whole square as it is. ये हमारे पास derivative आ गया. You should get at least 2 marks for this. Okay? Maybe 3, but at least 2. Achha. So that's the derivative. What do we do now? We equate this to 0. You get another mark for this, but for just equating this to 0 now. Because why? Because we're looking for stationary point. Stationary point पे क्या होता है? Derivative 0 होता है. इसको 0 से equate कर दे. What do we get then? We get 2e raised to power minus 5x into tan x into secant square x minus 5e raised to power minus 5x into tan square x. ये हमारे पास एक equation आ गई. Now we've got to solve this equation. ठीक है? अब क्या करें? What we can do now is we can take can we take anything common here? We can take e raised to power minus 5x common, and we can also take tan x common. Let's take those two terms common. यहाँ से हम common ले लेते हैं e raised to power minus 5x and also tan x. What are we left with? 2 secant square x minus
5 tan x. That equals 0. Now we've got a product. ठीक है? e raised to power minus 5x multiplied by tan x multiplied by this thing. Products, आप इन तीनों चीजों का product आपके पास 0 आ रहा है. What that means is at least one of these things has to be equal to 0. तो आप क्या करेंगे? You say either e raised to power minus 5x equals 0, ये आपके पास एक equation आ गई, or tan x equals 0, ये आपके पास एक और equation आ गई, or 2 secant square x minus 5 tan x equals 0. You get these three equations. ठीक है? It's always better to write all of them, and then if you want to ignore one of them, if that's not possible, you write that it's not possible. So for example, ये first form देखें, e power something, ये तो 0 कभी नहीं हो सकता. Positive number की जो मर्जी power के लिए 0 नहीं हो सकता. You can try that on your calculator. इसको कैसे solve करते हैं? आप log लेते हैं दोनों sides का, right? आप log लेंगे, right side पे आपको error मिल जाएगा, ln 0 आ जाएगा. You'll have to stop at that point. So you say this is not possible. यहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा. Okay. Now let's look at the other value. Tan x equals 0. अब ये tan x equals जब 0 होता है, remember ये हम quadrants वाले method से नहीं कर सकते. We have to think about the graph. Tan x 0 कहाँ पर होता है? Does anyone know? Tan x की value 0 कहाँ पर हो रही होती है? ग्राफ के अंदर, इस इंटरवल के अंदर, minus pi/2 और pi/2 के अंदर. So graph looks like this, remember? और in fact यहाँ से start कर लें अगर 0 से ग्राफ आपका इस तरह जाता है और लेफ्ट साइड पे इस तरह होता है. tan का ग्राफ minus pi/2 पे asymptote बन रहा होता है और इधर pi/2 पे asymptote बन रहा होता है. But it has a value of 0 at what point? When x equals 0. तो यहाँ से आपको एक solution मिल गया. Tan x equals 0 से आपको क्या मिला? x equals 0. That's one value that we're getting. ठीक है? एक आपके पास ये value आ गई. Tan x equals 0 से x equals 0. All right? Now, this is very important that you write this down. अक्सर लोग क्या करते हैं? यहाँ पे tan x को जाके divide कर देंगे 0 से, and they will miss out on this possible answer. Of course, that is supposed to be one possible answer. तो आपको लिखना था x की value 0 हो सकती है इस interval के अंदर. Okay, so that's one possible answer. Divide नहीं करते, common लेके 0 से equate करते हैं इसको. Okay, एक value ये आ गई. Now let's solve this equation that we've got on the right side. इसको कैसे solve करें? कोई भी equation solve करने के लिए, कोई भी trigonometric equation solve करने के लिए, we need exactly one type of trigonometric function. यहाँ पे तो secant भी आ रहा है, tan भी आ रहा है. Secant square को convert कर लेते हैं tan में. How do we do that? We know an identity for that. We know 1 plus tan square theta is identical to secant square theta. So secant square theta can secant square x की जगह पे क्या लिखना है? We can write 1 plus tan square x. Of course, you're given this identity in the formula sheet. अगर आपको भूल जाए, you can always refer to that. This is what we get. ठीक है? Now we simplify this. We get 2 plus 2 tan square x minus 5 tan x equals 0. It's a quadratic equation. अब क्या करते हैं? Substitution use कर लें. Tan की जगह पे कोई और letter डाल दें. You can use t if you want or any other letter. It doesn't really matter. Let me use a substitution. So let's say t equals tan x. What do we get from that? We get 2t square minus 5t plus 2 equals 0. Can we factorize this? 2t square minus 5t plus 2. इसमें क्या आएगा? 4. Yeah, so we can factorize this. It's always better to show the step. Minus 4t minus t plus 2 equals 0. अगर आप factorization मुश्किल लगती है, quadratic formula में values input कर दें, ठीक है, और उसके बाद आंसर्स लगते हैं. So it's better to write it, although paper 3 में you usually do not get penalized for that, but it's still better to just write it down. कितना टाइम लग जाता है? 10 सेकंड लग जाएंगे quadratic formula में values input करनी है, कर दें, उसके बाद आंसर्स लगते हैं, ताकि आपकी आदत बन जाए कि आपने एक स्टेप वो जरूर शो करना है. अच्छा, so what do we get from this? We get 2t minus 1 and t minus 2 equals 0. We get t equals 1 over 2 or t equals 2. So that means tan of x equals 1 over 2 or tan of x equals 2. इन दोनों को आप सॉल्व कर लें. आपको किस रेंज के अंदर वैल्यूज चाहिए? minus pi over 2 से लेकर pi over 2 तक. Okay, now let's think of quadrants.
दोनों में tan पॉजिटिव आ रहा है। tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इफ यू लुक एट द रेंज, द इंटरवल, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो आप हो नहीं सकते हो, सो यू हैव टू बी ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट नहीं पॉसिबल, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पॉसिबल है। तो बेसिकली जो आपका बेसिक एंगल आ रहा होगा वही आपके सोल्यूशन होंगे, बिकॉज वी कैन नॉट बी इन एनी अदर क्वाड्रेंट। तो आप डायरेक्टली वैल्यूज के लग सकते हो इफ यू वांट। x की एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से और x की एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। वाई? बिकॉज यू हैव टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और किसी क्वाड्रेंट में हम जा ही नहीं सकते। नाउ रिमेंबर द इंटरवल इज इन रेडियंस हियर, तो आपने यहाँ पे रेडियंस में आंसर देना है अपना, ठीक है। tan inverse of 1/2, let's evaluate this. Let's find out my calculator. But tan inverse of 1/2, can somebody do this for me? Mod angle radian. Okay, tan inverse of 0.5, that gives me 0.4636. 0.4636. इसको राउंड ऑफ अगर आपने करना है तो क्या लिखेंगे? 0.464. If you write 463 there, you will lose a mark. Okay, mark कट जाएगा। अच्छा, the other one, tan inverse of 2, that gives me 1.107. That's another root. You can write the whole thing like this, or if you want to round it off, उसने कोई दिया तो नहीं हुआ यहाँ पे? अच्छा, उसने कहा हुआ है you have to give your answer to 3 decimal places. जब क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है तो इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी टू फॉलो दैट। उसने क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इट हैज टू बी 3 डेसिमल प्लेसेस। 4 लिखेंगे आपका मार्क कट जाएगा। तो आपने यही लिखना है 0.464। एक आपका ये रिजल्ट हो गया और एक आपका ये हो गया 1.107। यू गॉट दीज 3 पॉसिबल आंसर्स, ठीक है। ये आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए थे, स्टेशनरी पॉइंट्स के, वी हैव फाउंड देम। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। That was question number 8 from this paper. Next, we have question number 10. Okay, let's look at this now. Now, this diagram shows a trapezium ABCD in which AD equals BC and that equals R and AB equals 2R. अच्छा, AD और BC equal है, R और AB आपको 2R है। आपको फिगर पर नजर आ रहा है सब कुछ। Acute angles BAD and ABC are both equal to X, वो भी फिगर पर नजर आ रहे हैं। Arcs meet at M, the midpoint of AB. Okay, so this is important. M is the midpoint of AB. Okay. Achha. Given that the sum of the areas of the shaded sectors is 90% of the area of the trapezium, show that X satisfies this equation. It doesn't really look that difficult. Next part में क्या है? Iteration है या iteration है? Okay, you can actually do the next parts. I'll just do the first part for this. बाकी सारे parts standard हैं. Verify करना है, iteration apply करनी है। Okay, चलें ये part C देख लेंगे, बाकी parts के आसान है। Let's do this first part. Sum of the areas of the shaded sectors. What is that going to be? Sectors के area क्या होता है? पहले तो हम relationship लिख देते हैं। उसने क्या कहा है? Area of sectors is 90% of the area of the trapezium. So that's going to be 90 over 100 times area of trapezium. Right? That's the relationship that we're going to be using. 90 over 100, को आप लिख सकते हो 0.9 if you want. That's the relationship that we're given. ठीक है? अब इसमें क्योंकि उसने आपको आंसर बताया हुआ है, you've got to be very careful about your working. एक एक स्टेप शो करना है, प्रॉपर रीजनिंग देनी है कि ये जो भी आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर्स 2 सेक्टर्स हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा 2 into, because there are 2 sectors, they're both equivalent, half r square, radius r ही है, theta की जगह हमारे पास x है यहाँ पे, so this is going to be r square x. That's the area of sectors. That equals 0.9 into area of trapezium. How do you find the area of trapezium? You need sum of parallel sides and also the height. उसमें से कुछ भी चीज आपको नहीं दी हुई तो आपको फाइंड करनी पड़ेंगी वो चीजें using trigonometry. What you can do is you can draw a line here. एक लाइन यहाँ पे बना दे। इससे क्या हो जाएगा? हमारे पास हाइट आ जाएगी। लेट्स कॉल दिस पॉइंट समथिंग, इसको हम कह देते हैं x. dx कैसे फाइंड कर सकते हैं? I'm going to do that working here. dx over
कुछ भी अच्छा नहीं, नीचे वाले यूज करनी यूज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट आर, ax r नहीं है, हम इस ट्राइंगल की बात करें, ax r नहीं है, बट हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल इज r, ad जो है दैट इज r, so you say dx over r which is the hypotenuse that equals sine of x। ठीक है, sin x is equal to perpendicular over hypotenuse, हमने अप्लाई कर दिया, यहां से हमें क्या मिल गया, dx equals r into sin of x। हाइट मिल गई ट्रेपीजियम की। अब क्या चाहिए, नीचे वाली लेंथ तो पता है हमें, ऊपर वाली लेंथ नहीं पता। We don't know what DC is. How do you find DC now? Now for that what we can do is we can find this length. We can find this length ax निकाल लेते हैं, और अगर ax निकाल लेंगे तो let me draw another vertical line here, yb भी वही होगा, तो हमारे पास ये दोनों लेंथ्स आ जाएंगी, उसको टोटल 2r में से माइनस कर देंगे, that's going to give you CD। Now let me do step by step here। पहले क्या करें, ax निकाल लेते हैं। ax कैसे आएगा, you can use any method। now you've got this side and also this side, आप Pythagoras भी use कर सकते हैं if you want, या फिर आप दोबारा से trigonometry use कर लें। you can say ax, that's the base, over the hypotenuse, that should equal cos of the angle is x। it's better because जहाँ पे देखें जब शो करने के लिए कहा है उसमें cos भी आ रहा है, so अब यही यूज कर लें trigonometry, that's going to be better। ax क्या आ गया, ax is r times cos of x। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहें, वी नो कि yb भी वही होएगा, yb भी लेंथ वही है जो ax की है, दिस इज ऑल्सो द सेम। So what can we say about DC now? DC is actually the same as xy, उसी के इक्वल है ना। ये वैल्यू क्या होगी, ये टोटल AB कितना था 2 times r, उसमें से माइनस कर दें ax और yb, ये दोनों माइनस कर दें, so basically इसमें से माइनस कर देते हैं 2 times r cos x। this is going to be our DC। so now we've got the length of DC, we've got the length of dx, height। अब हम area of trapezium लिख सकते हैं। क्या होता है area of trapezium, half into height, what's the height, dx, that's r sin x, into sum of parallel sides, AB की लेंथ कितनी है 2r, plus the length of DC, ये कितनी है, that's 2r minus 2r cos x, ये आपकी उसकी लेंथ थी। and now we just need to simplify this। इसको simplify करते हैं। उसने देखे फॉर्म क्या दी हुई है, x सब्जेक्ट बनाना है आपको, ठीक है, और उसमें r नहीं आ रहा, r मोस्ट लाइकली कैंसिल हो जाएगा सब, देखते हैं अभी। एक तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। what do we have now, we've got r square x on the right side, we've got 0.9 into 2, ये डिवाइड हो रहा है पूरे के साथ, r sin x को मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 4r हो गया पहले, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस बिकम्स 4r, तो हमें क्या मिल गया न्यूमरेटर के अंदर 4r स्क्वायर sin x। इसका आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, एक और स्टेप शो कर दें इफ यू वांट। 4r ये था टोटल, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक है, दैट बिकम्स 4r स्क्वायर sin x, and then r sin x into this thing, that's going to be minus 2r square sin x into cos x। ठीक है, how that makes sense to everyone? ये आ गया आपके पास। अब न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले लें अगर, तो ये वाला 2 हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट मी शो दैट स्टेप हियर। हम न्यूमरेटर से क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक 2r स्क्वायर कॉमन, 2r स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा अंदर, 2 sin x minus sin x cos x divided by 2। what happens now, 2 and 2 get cancelled, this 2 and this 2 get cancelled, ये जो r स्क्वायर है दूसरे साइड पे r स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, बिकॉज वो जाके डिवाइड हो जाएगा वहां पे, एवरीथिंग इज कैंसिल्ड। what are we left with, we're left with x equals 0.9 into 2 sin x minus sin x cos x। ठीक है, अब उसने क्या किया हुआ ऊपर,
उसने sin x को बाहर कॉमन लिया हुआ है, इसमें से हम sin x कॉमन ले सकते हैं दोबारा से, 0.9 तो लेफ्ट पर ही है, उसने sin x को कॉमन लेकर राइट पे रखा हुआ है, तो उसको कॉमन लेके बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा 2 minus cos x, that's what we had to prove. ठीक है, it was kind of complicated for 3 marks, इसके marks probably थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे, but that's what we get at the end. Okay, x equals 0.9 into 2 minus cos x whole times sin x. ठीक है, this is what we get. Walaikum assalam, Samir. I hope that's okay. Let's move on to the next part now. Acha. Now the next part is verify by calculation that x lies between 0.5 and 0.7. इसके लिए आप क्या करते हैं, आप सब चीज टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं, दूसरी साइड पे 0 रख लेते हैं, एक दफा ये इनपुट करते हैं, एक दफा ये इनपुट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है. I am sure you can all do that. Let's look at part C. इसने क्या show that if a sequence of values in this interval, which is the same interval that was given there, no, so if a sequence of values in the interval given by the iterative formula converges, then it converges to the root of the equation in part A. तो basically इसने आपसे सिर्फ कहा ये है कि ये जो iterative formula है ना, this corresponds to this equation that you found in the first part, कि ये दोनों एक दूसरे को correspond करते हैं. ठीक है, so basically जो iterative formula है वो उस equation से आप बना सकते हैं. Now how can we do that? Can we, so आपको करना सिर्फ यह है कि आपको इस equation को या तो आपको नीचे वाली equation को rearrange करके वो बना देना है, या आपको ऊपर वाली equation को rearrange करके नीचे वाली बना देना है. You can go either way and that's going to be okay. आपने एक equation को rearrange करके दूसरी equation बना के show कर देना कि they are actually equivalent. ठीक है, so let me do it this way. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, I'm going to start with this one. n+1 और n remove कर देंगे, हमारे पास क्या बचा, x equals cos inverse of 2 minus x over 0.9 sin x. Remember जब हम iterative formula बनाते थे तब एक साइड पे n+1 लगा देते थे, एक साइड पे n लगा देते थे. Now we've got the iterative formula already given, हमें वापस equation पे जाने हैं original, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, n+1 और n को remove कर देते हैं. And now if we simplify this, we should get that same thing back that we had there. अच्छा, ऊपर देखें cos inverse तो नहीं आ रहा था कहीं पे, तो हम पहले तो इस cos inverse को खत्म करते हैं. Let's take that to the other side. Cos inverse left पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos of x. Right side पे we've got 2 minus x over 0.9 sin x. ठीक है, now we need to get rid of the fraction. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, we can again ऊपर में क्या चाहिए था, 2 minus cos x था वहां पे. Yeah, so let's actually bring cos x to the right and take this to the left. हम ऊपर देख रहे हैं हमें किस फॉर्म में लेके जाना है, तो उस फॉर्म में जाने के लिए let's do the steps that are going to take it closer to that. इसको लेफ्ट पे लेकर आ रहा हूं मैं, और माइनस cos x को वहां पे लेके राइट के ऊपर. So you see we are very close now. 2 minus cos x आ गया राइट के ऊपर. अब क्या करें, 0.9 sin x को राइट पे ले जाते हैं, and that's going to give us 0.9 sin x into 2 minus cos x. इसको रीअरेंज करके लिखना है, उसने sin x बाद में लिखा हुआ था, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहा है. You can write it like this, and this is basically the same equation as before. तो आपने क्या करना है, इसको सिर्फ आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको दिखा देना है कि जो ये वाली इक्वेशन लिखी है, it's basically coming from that same equation. तो ये वही इक्वेशन आपके पास बन गई. तो इसका जो रूट होएगा इस आइटरेटिव फॉर्मूला का, वो आपका उसी को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, आपको सिर्फ ये रीअरेंज करके इसको ये दिखाना है. All right, I hope that makes sense. Let's move on to the next part. ये आइटरेटिव फॉर्मूला आपको यूज करना है, जिस पार्ट सी में दिया हुआ था, वो आप कर सकते हैं. That's pretty standard. Let's move on to question number 11. That's the last question that we're doing from this paper. Question number 11. Okay. With respect to the origin O, the points A and B have position vectors given by OA equals 2i minus j. So we've got one position vector for A, that's 2i minus j. We've got OB, that's j minus 2k. Show that OA equals OB and use a scalar product to calculate the angle AOB in degrees. That's a pretty standard question. आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं, उनको इक्वल शो कर देना है. Let's do that.
I generally prefer to write them in vector form. इससे मुझे आसान लगता है, but that's your preference. आपको जिस तरह बेहतर लगे. I'm going to write them in this form, vector form. OA क्या है? That's 2 minus 1. K तो इसके अंदर नहीं आ रहा. That's going to be 0. That's one vector. The other vector is OB. What's that? That is I term नहीं है यहाँ पे. That's going to be 0. J is 1 and K is minus 2. ठीक है. दोनों के magnitudes निकाल लें. OA का magnitude. What is that going to be? Square all terms, 2 square plus minus 1 square plus 0 square. And that's going to give you something. That's going to be square root of 5. OB का magnitude निकाल लें. That's square root of 0 square plus 1 square plus minus 2 square. ये आपने step show करना है, because उसने show करने के लिए कहा है कि equal है. तो आपने step show जरूर करना है. This gives you square root of 5, and then you say OA length is equal to OB length. ये हमने prove कर दिया. That was the first thing. अच्छा, दूसरा उसने क्या कहा है? Calculate the angle AOB in degrees. Angle AOB चाहिए. इस angle का हमारे पास एक ही formula होता है. इसके अंदर वेक्टर्स के अंदर, you can write that down on the side. ये formula sheet में दिया होता है. Cos theta equals A dot B over modulus of A into modulus of B. इसमें form different लिखी होती है. उसमें इस तरह लिखा होता है A dot B subject होता है और ऐसे लिखा होता है. You can just rearrange that क्योंकि आपको angle find करना है. Cos theta को subject बना दिया. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे cos theta equals A dot B. अच्छा, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, उसने क्या कहा है? आपको चाहिए एंगल AOB. यू नीड द एंगल AOB. एंगल किस पॉइंट के ऊपर आ रहा है? एंगल आ रहा है आपका पॉइंट O के ऊपर. ये O है, ये A है, लेट्स से ये B है. या तो आपने वेक्टर्स यूज करने हैं दैट आर बोथ पॉइंटिंग टुवर्ड्स O, या तो आप AO और BO यूज करेंगे, या फिर आपने वेक्टर्स यूज करने हैं दैट आर बोथ गोइंग अवे फ्रॉम O. OA OB, इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं. आप ये नहीं कर सकते कि एक का आप OA ले लें, दूसरे का आप BO ले लें. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. या तो दोनों वेक्टर्स O की तरफ जा रहे हो, उनका हेड O के ऊपर हो, या दोनों O से अवे जा रहे हो, उनकी टेल O के ऊपर. राइट, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं. हमारे पास ऑलरेडी OA OB है, तो उन्हीं को यूज कर लेते हैं. हम क्या कहते हैं? OA और OB का डॉट प्रोडक्ट divided by the magnitudes. What's the dot product? Corresponding terms को multiply किया, 2 into 0. ये आपको शो करना है प्रोसेस इसका भी. Don't write down the dot product directly. Write down the individual terms like this. इसका एक फायदा ये है कि आपकी अगर कोई एरर होता है, आपको वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे. अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे और एरर हो जाता है, you not get marks for working. ये डॉट प्रोडक्ट आ गया डिनोमिनेटर में. OA और OB के मैग्नीट्यूड्स we've already calculated them before. That's square root of 5 and square root of 5. ठीक है, let's evaluate this. मेरे पास क्या आ जाता है? I'm getting 0 and then -1 and 0. Yes, that's -1/5. Cos theta equals -1/5. ठीक है, यहाँ से मेरे पास एंगल आ जाएगा. इसका इनवर्स ले लें. अगेन नेगेटिव आ रहा है. अगर नेगेटिव होगा तो आपने ऑब्ट्यूज एंगल लिखना है, पॉजिटिव होगा तो आपने एक्यूट एंगल लिखना है, बिकॉज दो लाइंस के दरमियान में एंगल है ना. तो या तो आप ये वाला एंगल देते हो, तो सॉरी, दो लाइंस के दरमियान में नहीं है, इट्स बेसिकली लाइक दिस, इस तरह से एंगल है, या आपके पास ये एंगल आ रहा है. ये एंगल कभी भी एक पॉइंट के ऊपर 180 से ज्यादा नहीं हुआ करेगा. 180 से ज्यादा हो नहीं सकता. अगर आप इसको किसी भी और तरह करो तो वो दूसरी साइड से 180 से कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टू ड्रॉ इट लाइक दिस, तो इसमें ये वाला एंगल ठीक है 180 से ज्यादा बन रहा है, लेकिन ये वाला तो 180 से कम है. सो वी कुड गिव दिस एंगल देन. तो ये एंगल हमेशा 180 से कम होएगा. इसका मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है पॉजिटिव होता है कॉस, सेकंड में नेगेटिव होता है. तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो आपने एक्यूट एंगल दे देना है, नेगेटिव वैल्यू आती है आपने ऑब्ट्यूज एंगल दे देना. इसमें बहुत ज्यादा आपको क्वाड्रेंट्स वाले लगाने की जरूरत नहीं है. बस आप नेगेटिव आ रहे हैं, कैलकुलेटर से आपको वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी. cos इनवर्स ऑफ -1/5 you are so I'm getting अच्छा,
रेडियंस में क्या है मैंने, let me change that into 180 divided by pi. Yeah, so this is giving me theta equals, उसने डिग्रीज में कहा है, तो you have to give your answer in degrees. रेडियंस में देंगे तो मार्क कट जाएगा. It's going to be 101.5 degrees. ये आपका एंगल आ गया. इसमें एटलीस्ट 1 डेसिमल प्लेस देना होता है डिग्रीज के अंदर. डिग्रीज में आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं करना, एटलीस्ट 1 डेसिमल प्लेस लिखना है. आपने उसकी इंस्ट्रक्शन दी होती है ऊपर, इफ यू रिमेंबर, एंड द क्वेश्चन एंड ऑन द फर्स्ट पेज उसने कहा होता है 1 decimal place for angles in degrees. This is the minimum requirement. At least 1 decimal place. 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 से कम बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है, so keep that in mind. This turns out to be 101.5. Yeah, so that's the angle. Okay. Achha, Samir, to answer your question, how do we understand that they're talking about magnitudes here? अगर वो वेक्टर की बात कर रहा होगा ना, you will have these arrows there. You see those arrows? Agar arrows nahi lage hue, that means we're talking about magnitude here and not vector. ठीक है? Arrows nahi lage hue to magnitude की ही बात कर रहे हैं. Okay? All right, let's move on. Let's move on to the next question, next part. Now it says the midpoint of AB is M. The point P on the line through O and M is such that PA ratio OA. Yeah, that's the second part. Midpoint of AB is M. The point P on the line through O and M is such that PA ratio OA is square root of 7 ratio 1. Find the possible position vectors of P. Okay, that's the last part. अब इसके लिए it's generally going to be easier if you can just draw a rough figure. That might help just for your own understanding. हम कहीं भी 1.8 मार्क कर लेते हैं. अब of course it's not going to be accurate because हम 3 dimension की बात करें, 3 dimension को हम यहाँ पे accurately draw तो नहीं कर सकते. But just for understanding, let's say A यहाँ पर है, एक point B है कहीं पे इधर. इन दोनों का midpoint is M. That's the midpoint. Now the point P on the line through O and M. O क्या है? O is the origin. So O is the origin. That may be somewhere here. Let's say this is the origin. इस लाइन के ऊपर जो origin और M से पास कर रही है, इस लाइन के ऊपर there is a point P such that PA and OA, उनकी जो ratio है, that is square root of 7 ratio 1. Find the possible position vectors of P. Okay, अब ये P point कहाँ पे है? We don't know where that is, but जहाँ पे भी है, इस line के ऊपर ratio जो बन रही है PA और OA की, what is that? That is square root of 7 ratio 1. That's what we're given. Now that looks quite complicated, but if you have drawn a figure, and let's mark P somewhere, we don't know कि वो कहाँ पर होगा, कहीं पे भी mark कर लेते हैं. Let's say it's somewhere, I don't know, PA का distance ज़्यादा है, P से A का distance ज़्यादा है, और origin का A से distance कम है. So let's say ऊपर कहीं जाके यहाँ पर भी होगा. That's one possibility. हो सकता है यहाँ पे ऊपर हो, नीचे भी हो सकता है, कहीं पे जाके इधर भी जाके हो सकता है. But let's just mark one point, और उससे देख के हम इसको इस पे सोचने की कोशिश करते हैं. Now, how do we think about this? अब point P जो है वो line OM के ऊपर लाई कर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, point P का कोई position vector निकालने की कोशिश करते हैं. How do you do that? सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, आपको M का position vector निकालना पड़ेगा. Right? M is the midpoint of AB. सबसे पहले क्या करें, M का position vector निकालें. M is the midpoint of A and B. How do you find OM? OM find करना है सबसे पहले. That's the first thing that we need. ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, if you think of the diagram here, we can go from the point O to A, O से A पे चले जाएं, और फिर A से M पे चले जाएं. Right? That's one path that we can follow here, OA and then AM. So that's what we do here. We say OM equals OA
प्लस AM। अच्छा OA तो हमें पता है, OA क्या है? OA was 2 minus 1 0, 2 minus 1 0. What about AM? AM क्या है? AM is essentially half of AB. AM is half of AB. तो इसके लिए हम लिख लेते हैं half of AB. अब AB क्या चीज है? AB तो हमारे पास आ सकता है आराम से। AB is going to be OB minus OA, right? AB क्या होएगा पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में? OB minus OA. Let's figure that out. AB. Let me just calculate that here and then I'll take it there. AB is going to be 0 minus 2, that's minus 2. 1 minus minus 1, that's plus 2. 1 plus 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, minus 2 minus 0, that's minus 2. ये मेरे पास वेक्टर AB आ गया। ठीक है, this is the vector AB. I can actually just input it there. minus 2, 2 and minus 2. Let's evaluate this. 2 minus 1, ये मेरे पास आ जाएगा 1. Minus 1 plus 1, that's going to be 0. 0 minus 1, that's going to be minus 1. OM vector सबसे पहले आपने निकाल लिया. This turns out to be 1 0 minus 1. ठीक है, ये पहली चीज आ गई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि पॉइंट P इस लाइन के ऊपर लाई करता है, कौन सी लाइन के ऊपर? OM के ऊपर। तो P का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस लाइन की फॉर्म का होएगा, राइट? इनफैक्ट an easier way of thinking about this could actually be, क्योंकि अब इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप निकाल भी लेंगे उससे भी आपके पास वही आएगा, but you can think of it like this as well actually, क्योंकि ये ओरिजिन है। OM और OP aren't they parallel to each other? आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ P निकालना होता है अगर, wouldn't that be parallel to this thing OM के? उसके पैरेलल होएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं जो OP है हमारे पास, OP क्या होएगा? OP is going to be parallel to OM. Remember parallel vectors में क्या होता है, हम एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। So we can say OP is equal to K times OM, right? Because parallel vectors है ना, तो एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखते हैं। अब K की वैल्यू ऑफ कोर्स हमें नहीं पता, लेकिन हम स्केलर मल्टीपल इस तरह से लिख सकते हैं। What does that become now? OP वेक्टर क्या बन गया? OP वेक्टर हमारे पास बन गया K times OM, that's K into 1 0 minus 1. That gives me K 0 and minus K. This is the vector OP. एक हमने ये निकाल लिया, OP vector आ गया। Once we've got the OP vector, now it's going to be relatively easier to think about this. उसने कहा distance PA और distance OA, इनकी जो ratio है, that is square root of 7:1. Okay. Now, what about PA distance? ये कैसे निकलेगा? हमें पहले PA vector निकालना पड़ेगा. Let's find the vector PA. Vector PA निकाल लें. PA vector, that's going to be OA minus OP. That equals OA क्या था? It was 2 minus 1 0. Subtract from that OP. OP is K 0 minus K, and that gives us something. That gives us 2 minus K, minus 1 and plus K. ठीक है, ये हमारे पास आ गया वेक्टर PA वेक्टर आ गया। OA वेक्टर तो हमारे पास पहले से, उसका इनफैक्ट मैग्नीट्यूड भी हमें पता है पहले से, दैट्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम वो रिलेशनशिप यूज करते हैं। उसने क्या रिलेशनशिप दिया हुआ था वहां पे? उसने कहा है PA रेशो OA, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं रेशो को। वी कैन से PO और OA की जो रेशो है वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7:1. So that's square root of 7/1. That's just going to be square root of 7. PA का मैग्नीट्यूड क्या है? Let's figure that out. It's going to be square root of 2 minus K whole square, right? First component का square plus minus 1 square plus K square.
divided by the magnitude of OA. OA क्या है? This is OA 2 minus 1 0. इसका magnitude हमने पहले ऊपर निकाला भी हुआ है. That's square root of 5. आप वो directly use कर सकते हैं if you want. या आप दोबारा निकालना चाहें दोबारा निकाल सकते हैं. But it's going to be square root of 5. That equals square root of 7. And now we can just solve this equation. यहाँ से दो k की values आएंगी. वो हम यहाँ पे input कर देंगे OP vector के अंदर. Let's do this. Square root of 5 को right पे multiply कर दें पहले जाके. Left side को expand कर लेते हैं. We have 4 minus 4k plus k square. ये bracket को expand कर लिया. You got plus 1 plus k square. Square root of 7 into square root of 35. That's square root of 7 into square root of 5. That's going to be square root of 35. दोनों sides को square कर लिया. Square roots खत्म हो जाएंगे. What do we have on the left side now? We've got 2k square and minus 4k plus 5. That equals 35. ठीक है, दोनों sides को square कर दिया. दोनों sides को square कर दिया, तो square roots खत्म हो गया हमारे. Now we've got this thing. It's a quadratic equation. 2k square minus 4k minus 30 equals 0. That gives us k square minus 2k minus 15 equals 0. Can we factorize this? 15 का factors 5 और 3 use कर सकते हैं. They're going to work. K square minus 5k plus 3k minus 15 equals 0. You get two factors from this. K minus 5 into k minus 3. That equals 0. Can you think about it again? K plus 3, not minus 3. K minus 5 and k plus 3, दो factors आ गए. इससे हमारे पास दो k की values आ गई. K equals 5 and k equals minus 3. ये दो k की values आ गई. उसने two possible position vectors कहा हुआ था ना? नहीं, two तो नहीं कहा था, लेकिन उसने possible position vectors of p कहा था. So we are getting two values of k. अब हम क्या करेंगे? ये दो values of k आई हैं, जो OP का position vector था उसमें जाके input कर दें. We knew that OP was, let me just do that here now. OP position vector was k0 minus k. एक दफा इसमें k की वैल्यू 5 इनपुट कर दें, एक दफा इसमें k की वैल्यू -3 इनपुट कर दें. जब 5 इनपुट करेंगे आपके पास एक पॉसिबल पोजीशन वेक्टर आ जाएगा. That's going to be 5 0 minus 5. When you input k equals -3, you're going to get -3 0 and 3. These were the two possible position vectors of p that we were looking for. ये हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, उसने कोई स्पेसिफिक फॉर्म तो नहीं कहा हमें यहाँ पे. उसने सिर्फ पॉसिबल पोजीशन वेक्टर्स का है. So that's what we get. अगर ij के फॉर्म में कहा होता उसमें हम कन्वर्ट कर देते, but this is okay. This is your final result. Any problems with this? Does that make sense to everyone? ये आपके पास दो वेक्टर्स आ गए. Okay. So this is the whole working for this question. Quite tricky. वेक्टर से क्वेश्चन रीसेंट पेपर्स में थोड़े से ज्यादा ट्रिकी होना शुरू हो गया है, बिकॉज उसने प्लेन निकाले. तो अब इसी जो रिमेनिंग सिलेबस है इसमें से वो कोशिश करता है थोड़े से डिफिकल्टी लेवल हाई रखने की. एक पार्ट इस तरह का आता है अक्सर. Okay, so that was this paper 3 variant 2. We did these 5 questions from this, 2, 4, 8, 10, and 11. Let's move on now to the next paper. Next, we're doing May, June 2021, paper 3, variant 3. Again, we're going to do some specific questions from this that are relatively more complicated. I've chosen these 4 questions from this, question number 7, 8, 9, and 10. ये 4 questions इसमें से देखेंगे इंशाल्लाह. First question में तो binomial है, you can do that expansion. Second, again, इसमें 4 raised to power x को substitute कर लें, and then you can solve that. This is simple parametric differentiation. ये आप कर सकते हैं. Partial fractions, integration उसके बाद partial fractions करने के बाद ये log form में convert हो जाएगी. This is trigonometry. इसमें convert करके this is basically a quadratic. End पे जाके बस आपने इसमें ख्याल रखना होता है क्योंकि tan square की values आएंगी आपके पास. Tan square theta equals something. When you take square root,
you have to make sure tan theta plus minus आप लिखें, plus minus दोनों consider करने होते हैं, just have to be careful about that. वो हो जाएगा, ठीक है. That's going to be question number 5. वो आप कर लेंगे. इसके second part में solve करना आपने इसको. 6 is iteration. Again, I'm going to skip that. Let's start from this. Question number 7 से start करते हैं because that's where the complicated part of this paper starts. Let's look at this. Okay. So from the curve shown, for the curve shown in the diagram, the normal to the curve at the point P with coordinates x, y. So this point, P has coordinates x and y. Meets the x-axis at n. So in normal जो आ रहा है आपके पास curve का, it's what happened there? This normal meets the x-axis at this point n. N पे जाके आपको नजर आ रहा है, it meets the x-axis. Okay, now what do you have to do? The point M is the foot of the perpendicular from P to the x-axis. So you can see that here as well. Point M जो है P से एक perpendicular बनाए x-axis के ऊपर, तो ये point M मिलता है हमें. Now the curve is such that for all values of x in this interval, the area of the triangle PMN is equal to tan x. Now that's an important piece of information. इसका यहाँ पे लिख लेते हैं. Area of the triangle at PMN is equal to tan x. ये information इसने दी है यहाँ पे. Now we have to show that mn over y equals dy over dx. Now that looks rather complicated. Mn over y equals dy over dx. Okay, now let's think about this. Mn is this length. Y क्या है? Y is basically this length. ये आपका y है, right? Because y coordinate क्योंकि p का y है, so this vertical length is y here. Mn over y is given to be dy over dx. अच्छा, dy over dx क्या होता है? Dy over dx is the gradient of the curve at any point, or you can say gradient of the tangent, right? Dy over dx क्या होता है? Gradient of the tangent at any point. और हमारे पास Pn क्या चीज है? Pn जो है, this is the gradient of the normal. Pn is the gradient of the Pn is the normal to the curve. तो हम क्या कर सकते हैं? हम actually इसमें ये कर सकते हैं, हम gradient of normal निकाल लें. Gradient of the normal. What is that going to be? Gradient of normal. Pn की बात हो रही है, Pn का gradient. Gradient क्या होता है? Change in y over change in x. लेकिन y में जो change है यहाँ पे negative है, right? आपको gradient negative होना चाहिए, y में change negative है, तो इसका gradient क्या हो जाएगा mn का? That's going to be minus y. Change in x, what's that? That is mn. So minus y over mn. अच्छा, ये तो हमारे पास यहाँ से आ गया. Gradient of normal should be minus y over mn. Now, where does dy over dx come from? Let's think about that. Tangent का gradient क्या होता है? वो हमें पता है, dy over dx होता है ना? Gradient of tangent, that is dy over dx. अगर इससे आप normal का gradient निकालो dy over dx से, तो वो क्या बन जाता है? इसका negative reciprocal, right? dy over dx का negative reciprocal क्या होएगा? It's going to be minus dx over dy. So we've got the gradient of the normal here. We've got the gradient of the normal here. What we can do is we can equate them, and that's going to give us a relationship. Just say hopefully rearrange करके हमारे पास ये आ जाएगा. Let's try that. Let's equate both of them. So I'm basically equating this thing because this is the gradient of the normal, and this is also the gradient of the normal. They should be equal. इन दोनों को अगर हम equate कर दें, हमारे पास क्या आ जाता है? Minus y over mn equals minus dx over dy. Now we can, so we can just cross multiply. mn वहां पे चला गया, एक तो माइनस माइनस खत्म हो गया, mn उधर चला गया, y भी उधर चला गया, dy इधर ले आए, dx इधर ले आए.
सो बेसिकली बस इंटरचेंज कर दे दोनों साइड्स को, या फिर अभी ये कहते हैं रेसिप्रोकल लेने दोनों साइड्स का, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लें, इक्वेशन है ना, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लेने, माइनस खत्म कर दें, we end up with that same thing directly, mn over y equals dy by dx. Minus signs तो खत्म हो गए थे ना, because they get cancelled, and then we take reciprocal of both sides, we get this that we wanted to prove. ये हमें prove करना था, ठीक है. Looks pretty complicated actually. It's very different from what we usually see. It's a very non-standard question, but I hope that makes sense. तो सोचना पड़ा यहाँ पे. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं hence show that x and y satisfy this differential equation. Okay, so आपको पिछला पार्ट यूज करना है, इस चीज को यूज करना है. यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ रही है, tan x पे आ रहा है. tan x क्या था, रिमेंबर उसने आपको ये एक रिलेशनशिप दिया हुआ था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू tan x. ओके, अच्छा, एक तो पिछला पार्ट यूज करना है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. पिछला पार्ट हमने क्या प्रूव किया, वी हैव प्रूव्ड mn over y equals dy over dx. Now we've got another relationship there, and that is that the area of the triangle PMN is equal to tan x. PMN का area जो है, that is tan x. Area of triangle PMN क्या हो जाएगा? It's a right angle triangle, half into base into height. Area of triangle PMN is tan x, half into base into height. MN आपकी base है, height क्या? Height is y. So we basically get this relationship. ठीक है, एक तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया, और लेफ्ट साइड पे जो हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया था वो भी आ गया. नाउ व्हाट डू वी वांट एट द एंड, हमें प्रूव क्या करना है, वी वांट टू शो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास आ रहा है y आ रहा है, dy by dx आ रहा है, tan x आ रहा है, mn नहीं आ रहा कहीं पे. mn is nowhere to be found here. जो इक्वेशन शो करनी है इसमें mn नहीं है, तो हम क्या करते हैं, mn को एलिमिनेट कर देते हैं इक्वेशन से. लेफ्ट वाली इक्वेशन से अगर मैं mn को सब्जेक्ट बना दूं, या राइट वाली से mn को सब्जेक्ट बना दें, दैट्स योर चॉइस. किससे भी mn को सब्जेक्ट बना दें, दूसरे में जाके इनपुट कर दें. अच्छा, लेट्स मैं राइट वाले पे mn को सब्जेक्ट बना देता हूँ. आई गेट 2 tan x over y, and now let's input that in the first equation. इसको यहाँ पे जाके इनपुट कर दें. we get 2 tan x over y, और ये पहले से एक y है, so it's going to be y into y. On the other side I've got dy over dx. Now I can make tan x the subject. tan x को यहाँ पे रख लेते हैं, बाकी सब कुछ राइट पे ले जाएं. y into y is going to be y square. 2 वहां पे चला जाएगा, 1 over 2 बन जाएगा. So we got 1 over 2 y square dy over dx, and that's what we wanted to prove there. हमने कर दिया. इसको रीअरेंज करके लिखना चाहे लिख सकते हैं, 1 over y square into dy over dx, that equals tan of x. This is what we wanted to prove there. All right, ये आपका second part हो गया. Let's move on to the next part. अब next part देखें. It says given that y equals 1 when x equals 0, solve this differential equation to find the equation of the curve expressing y in terms of x. This part is actually pretty straightforward. Let's try to be quick. दिल से कर लेते हैं. Differential equation को solve करना है, कैसे solve करते हैं? We separate the variables first. Variables already separated हैं एक तरह से. We have 1 over 2 y square dy, dx को right पे ले जाएं, tan x dx. Let's integrate both sides. Integrate कर दें दोनों sides को. Left side with respect to y integrate होगी, right side with respect to x integrate होगी. Half y square का integral, simple power rule, half as it is, y की power increase कर दी, y cube over 3 equals tan x का integral. Tan x का integral कैसे करते हैं? We write it as sin x over cos x, and then we use the log rule. How are we going to use the log rule here? We say cos x का derivative क्या होता है? Cos x का derivative होता है minus sin x. Cos x का derivative is minus sin x. तो हम ऊपर किसी तरह से minus sign कर देते हैं. कैसे करेंगे? We can put a negative sign inside. यहाँ पे अंदर minus कर देते हैं, but then to balance that, we have to put a negative sign outside as well. बाहर हमने minus sign लगा दिया to balance that. अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? लेफ्ट पे तो हमारे पास आ गया 1 over 6 y cube. On the right side we've got minus
ln ऑफ द डिनोमिनेटर, बिकॉज ये वो वाली फॉर्म आ गई है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, log ऑफ द डिनोमिनेटर एंड देन प्लस सी. दिस इज what we get from this. अब क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड कर ले. इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है x equals 0, y equals 1. Let's input that here. That's going to give us 1 over 6 equals minus ln cos of 0 plus c. Cos of 0 1 होता है, yeah, cos of 0 1 होता है, ln 1 0 हो जाता है. c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, c की वैल्यू आ गई 1 over 6. Let's input that back in the equation. We get 1 over 6 y cube equals minus ln of cos x plus 1 over 6. That's what we get. Now we have to make y the subject. उसने कहा था y in terms of x show करना है. एक तो 6 को जाके वहां पे राइट में मल्टीप्लाई कर दें. We get y cube equals minus 6 ln of cos x plus 1. And now you can take cube root to get y in terms of x. Cube root ले लें, minus 6 ln of cos x plus 1 whole raised to power 1 over 3. Cube root की फॉर्म में लिखना चाहिए, उस फॉर्म में लिख दें. इस तरह से पावर फॉर्म में लिख दें. पावर आपकी हो जाएगी 1 over 3, and that's the final result that we get from this. All right, ये हमारे पास y in terms of x आ गया यहाँ पे. This was question number 7. Question number 7, part B. Any problems with this? Is that okay? All right, let's move on. Question number 8. That's the next one that we want to do. This actually looks relatively easier. Yeah, maybe the second part. इसका first part आसान है, वो आप कर लें. m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, राइट? तो ये आपके पास एक फंक्शन है, क्वोशिएंट रूल लगा दें, फाइंड द डेरिवेटिव, पुट दैट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. x को उसको 0 से इक्वेट करके उसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा. So this part is pretty straightforward. Let's actually move on to the next part of this, part B. It says, by using integration by parts, show that for all a greater than 1, this integral is less than 1 over 9. Now, again, that's a question that's slightly different from what you normally see in past papers. Let's see how we're going to think about this. इसको पहले तो integrate करना है. अच्छा, इसको integrate करना है तो okay, ठीक है. ऊपर first part तो कहीं पे use नहीं हो रहा. उसने क्या integration में parts use करना है, उसने आपको hint दे दिया already. So we have to use integration में parts. Integration में parts कब use करते हैं? When you got a product. So what we do here is we make it a product. इसको पहले आप इसको product form में लिखते हैं. How do you write this in product form? It's going to be ln x multiplied by x raised to power minus 4 dx. अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करना है, and we have to choose for that what we're going to take as u and what we're going to take as dv over dx. हमें पता है जब log आ जाता है और इनवर्स या tan इनवर्स आ जाता है तब तो हमें इसी को u लेना पड़ता है. But if you want, you can use that rule. I8 use कर लें, इसको देख लें. log लेफ्ट पर आ रहा है, algebraic फंक्शन राइट पे आ रहा है, तो log को हम u लेंगे और algebraic फंक्शन को dv over dx लेंगे. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. Let me write down the formula. The formula is integral of u into dv over dx with respect to x. That equals u into v minus integral of v du over dx with respect to x. ये इस तरह से फॉर्मूला शीट में दिया होता है. ठीक है, अब सबसे पहले हमने चूज कर लिया कि हमें u क्या लेना है और dv over dx क्या लेना है. So we know ln x को हमने क्या ले लेना है यहाँ पे, u, और इसको हमने ले लेना है dv over dx. And we discussed the reason for that. I8 आप यूज कर लें, उससे आपके पास आ गया. अच्छा, now let's apply the formula. Let's apply the formula on this. उससे पहले in fact let's write down these values separately. u पहले लिख लें साइड पे. u क्या है? ln x. du over dx क्या हो जाएगा?
it's going to be 1 over x. You've got dv over dx. What is that? That is x raised to the power minus 4. इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? v x raised to the power minus 4 plus 1, which is minus 3 divided by minus 3, and that gives you minus 1 over 3 x raised to the power minus 3. ये आपके पास आ गई, ये चीजें आपको चाहिए. u चाहिए, du over dx चाहिए, और आपको यहाँ से v चाहिए. These are the things that you're going to input in the formula. ठीक है. अब फॉर्मूला में क्या था हमारे पास? I'm going to write that here again. We've got uv minus integral of v du over dx with respect to x. ये लिमिट्स बाद में एंड पे जाके देखें. अभी let's just evaluate this first. u times v, that's going to be ln x into v is minus 1 over 3 x raised to the power minus 3. We subtract from this integral of v. Again, what's v? v is minus 1 over 3 x raised to the power minus 3 into du over dx. That is 1 over x with respect to x. Okay. What does that give us now? 1 over 3. इसको हम इस तरह लिख लेते हैं. 3x cube नीचे आ गया into ln x. Let's take the constant outside. ये क्या हो गया? plus 1 over 3. Constant multiply हो रहा होता है, उसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं for simplifying things. अंदर क्या बच गया हमारे पास? This is x raised to the power minus 3. This will go to the denominator, या फिर नीचे वाले x को इनफैक्ट ऊपर ले आए. We will get x raised to the power minus 4 with respect to x. अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? We will get plus 1 over 3 into x raised to the power minus 3 divided by minus 3. And now we've got to input the limits. एक दफा और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं before we actually input the limits. Minus 1 over 3x square ln x minus 1 over 9 x cube. That is what the integral turns out to be. ये आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी इस पॉइंट के ऊपर. अब सिंपली क्या करना है आपको वो लिमिट्स इसके अंदर इनपुट कर देनी. Now what are the limits? Limits are from 1 to a. 1 to a limits input कर दें. What does that give us? That gives us 1 over 3 a square into ln of a minus 1 over 9a cube. Subtract from that the case when you input 1, that gives you minus 1 over 3 into ln of 1 वो 0 हो जाएगा, minus 1 over 9. And now you simplify this thing. That's going to give you minus 1 over 3a square into ln of a. Was it 3a square or cube? Okay, I'm sorry. This was actually supposed to be a cube here. यहाँ पे ऊपर से cube चला रहा था. I changed that to square. Yeah, minus 1 over 9a cube. ये तो 0 होगी टर्म. ln 1 0 होता है. Minus into minus 1 over 9, that's going to give us plus 1 over 9. This is the integral that we end up getting. You can write it like this. 1 over 9 minus 1 over 3a cube into ln of a minus 1 over 9a cube. This is the value of that integral that we end up getting eventually. ठीक है, ये हमारे पास वो इंटीग्रेशन आ गई उसकी. Now, how do we argue that this is less than 1 over 9? How do we argue that this is less than 1 over 9? अब देखें, अब जब आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई n पे, अब देखें 1 over 9 तो यार है यहाँ पे, है ना? अब इसमें से कोई चीज माइनस कर रहे हैं, इसमें से कोई चीज माइनस कर रहे हैं, 1 over 9 में से कोई चीज माइनस कर रहे हैं. If we can somehow prove that this thing and this thing, both of them are positive, that will be enough to prove कि
ये पूरा एक्सप्रेशन 1/9 से छोटा है, बिकॉज 1/9 में से कोई पॉजिटिव चीज माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 1/9 से छोटा होएगा. इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी easier to understand if you write it like this. अगर आप माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे, अंदर के आगे आपके पास 1/3a³ ln a plus 1/9a³, ये आपके पास अंदर रखा हुआ. You've got to prove somehow that this thing is positive. अगर ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट 1/9 से छोटा आएगा, बिकॉज आप 1/9 में से कोई चीज माइनस कर रहे हैं. ठीक है, हाउ डू यू प्रूव दिस? उसने आपको क्या दिया हुआ है? उसने आपको दिया हुआ है a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी a एक तो पॉजिटिव है और 1 से भी बड़ा है. When a is greater than 1, that basically means ये टर्म पॉजिटिव होएगी, 1/3a³ पॉजिटिव होएगा, राइट? बिकॉज a पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव है. ln a भी पॉजिटिव होएगा. Why? Because यहाँ इसके लिए a का 1 से बड़ा होना जरूरी था. ln of a number that's greater than 1, that is positive. 1 से छोटे नंबर्स का ln लेना वो नेगेटिव आता है. So इसलिए इसका 1 से बड़ा होना जरूरी था. 1 से बड़ा होगा, a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ln of a आपका पॉजिटिव आएगा. और 1/9a³, अगेन अगर a पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होएगा. ठीक है, सो आप क्या कहोगे? 1/9 less than something positive, the result is going to be, this gives us something that is less than 1/9. ये minus 1/9 से छोटा नंबर होएगा. That's what you can argue here, कि 1/9 में से कोई पॉजिटिव नंबर हम माइनस कर रहे हैं. 1/9 में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो है वो 1/9 से छोटा आएगा. सो दैट्स व्हाई दैट गिवन स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड. वो जो ऊपर हमारे पास रिजल्ट था, ln of x over x raised to power 4 with limits 1 to a, that should be less than 1/9 for this reason. ठीक है, I hope that makes sense. This argument at the end was slightly complicated, but that's how we'll do it. इसका 1 मार्क है n के ऊपर. If you get to this point, अगर आप इस point पे पहुंच गए तो you still get at least 5 marks in this. ठीक है, इस n पे argue करने का 1 मार्क होएगा, but that's how you'll do it. Okay. अच्छा, let's move on to the next one. Next we've got question number 9 here. Again we've got vectors. ये देखते हैं. Vectors से question, as I said, थोड़े से complicated होते जा रहे हैं. इनका एक part at least. The quadrilateral ABCD is a trapezium in which AB and DC are parallel. Okay, so we've got a trapezium. With respect to the origin O, the position vectors of A, B, and C are given. Given that DC equals 3 times AB, find the position vector of D. Okay, ये तो simple vector सा question है, तो O levels है basically. DC को आप कैसे लिख सकते हो? DC को आप लिख सकते हो position vectors की terms के अंदर OC minus OD. Second point का position vector minus the first point का position vector. That equals 3 times OB minus OA. ठीक है, AB वेक्टर क्या आएगा? B का पोजीशन वेक्टर minus A का पोजीशन वेक्टर. And now you just input values. Again, it's going to be easier, or that's your choice actually. I'm going to do it using the vector method. इस तरह से IJ के फॉर्म में भी कर सकते हैं आप इसको, समझता नहीं है. I'm going to do it this way. 2 minus 3. This is OC minus OD. That equals 3 times OB minus OA. So let me actually write them down in vector form first. Space है हमारे पास. OB क्या होएगा? OB is going to be 1, 3, 1. Subtract from that OA, that is minus 1, 2, and 3. इसको evaluate कर लें. What do we get? We can, so we get 2 minus 3 minus OD, that equals 3 times 1 minus 1, 1 plus 1 हो गया, 2 आ गया,
3 minus 2, that's 1. 1 minus 3 is minus 2. And now we can take OD to the right side. इसको right पे ले गए, उसको left पे ले आते हैं. यहाँ पे क्या था? 2, 2 and minus 3. I can multiply 3 inside and bring it here. 3 into 2 क्या होगा? 6. 3 into 1 is 3. 3 into minus 2 is minus 6. ये evaluate कर लें. ये आपके पास OD आ जाएगा. D का position vector. 2 minus 6 is minus 4. 2 minus 3 is minus 1. And minus 3 minus minus 6, that's minus 3 plus 6. That's going to be 3. That's the position vector of D. उसमें बाकी vectors IJK form में लिखे हुए थे. So if you want, you can write it in IJK form as well. But this is also fine. ठीक है, ये आपके पास OD vector आ गया. अगर उसको IJK form में लिखते तो वो क्या होता? minus 4i minus j plus 3k. ठीक है, that's the vector OD, D का position vector. All right, let's move on to the next part. Next part में वो क्या कहता है? Next part में we are asked to state a vector equation for the line through A and B. अच्छा, अब देखें AB तो हमने निकाल लिया already. This is the vector AB. OB minus OA जो हमने किया था, that was AB. ये आपका AB vector है. आप दोबारा से निकालना चाहिए, दोबारा से कर सकते हैं, but AB vector हमने निकाल लिया. That's the direction of this line. That's 2, 1, minus 2. 2 points हैं आपके पास, कोई भी point choose कर लें और standard equation में लिख दें. R equals A plus lambda into D. What's your equation? R equals A. A is any point. You can use OA if you want, or OB. इन दोनों में से कोई भी choose कर लें. So let's say मैं 1, 3, 1 ले लेता. 1, 3, 1 plus lambda into the direction vector. Direction क्या है? This is the direction. That's 2 minus 1, 2. That's the vector equation of this line, or this line through A and B. ठीक है, हमारे पास vector equation आ गया इसका. Okay, the first two parts are pretty straightforward, easy, 4 marks. You got there? Now let's move on to the next one. Now it says, find the distance between the parallel sides and hence find the area of the trapezium. Okay, distance between the parallel sides and hence find the area of the trapezium. Let's think about that again. उसने क्या कहा था यहाँ पे? Quadrilateral ABCD is a trapezium. AB और D से parallel है. यहाँ पे बना लेते हैं इसको just to understand it better. We've got AB here. AB and DC are parallel. Okay, so let's make a general trapezium. Let's say it looks something like this. This is A, B, C, and then D. This is a trapezium. अच्छा, इस हमें क्या करना है? Distance between parallel sides find करना है और फिर area find करना है इसका. Area कैसे निकालते हैं? Area आपके पास sum of parallel sides, ये तो हम निकाल सकते हैं already AB और DC का magnitude. ठीक है, तो अगर हमें height मिल जाएगी, which is this distance, तो हम area निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? You can actually just use the standard method that we've got for finding distance between a point and a line. Perpendicular distance between a point and a line. अब देखिए आपके पास AB की equation already आ गई है. AB की equation इसने निकलवाई आपसे पिछले part के अंदर. That's this equation. ठीक है, what you can do is you can draw a perpendicular here. D से एक perpendicular बनाया इस line के ऊपर. Let's call this point something. Let's call this point X. और ये dx distance find कर लें. ये perpendicular distance वाला जो method होता है point से line के ऊपर, वो आप यहाँ पे directly use कर सकते हैं. Now what is point X? हमें क्या चाहिए अब यहाँ पे? एक तो D का position vector चाहिए, वो हमने पहले निकाल लिया already. वो क्या था? D का position vector, that was -4 -1 3. Let's use that. आप C भी use कर सकते हो. That's also fine. इसमें कोई मसला नहीं है. Same distance आएगा. I'm using D here. दूसरा पॉइंट क्या है? OX. X का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? Now think about this. X lies on the line AB. X lies on the line AB.
x पॉइंट उसी फॉर्म का होगा, x का जो पोजीशन वेक्टर वो उसी फॉर्म का होगा जैसे जिस फॉर्म की ये लाइन है। ओके, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर सारे इसी फॉर्म के हैं। सिंस x लाइज ऑन दिस लाइन, तो x का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो उसी लाइन की फॉर्म का होगा। वो लाइन क्या है? 1 + 2 लैम्डा, 3 - लैम्डा एंड 1 + 2 लैम्डा। ये आपके पास आ गया OX का पोजीशन वेक्टर। Now this is a standard method that we always use for finding perpendicular distance between a point and a line। ये आपने OX वेक्टर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। कौन से दो वेक्टर्स? DX और AB। These are perpendicular to each other. We know that. DX और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये आइडिया हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? AB वेक्टर तो है ऑलरेडी हमारे पास, that's 2 - 1 2, we know that. This is the AD vector, AB vector. DX आपको निकालना पड़ेगा। DX कैसे निकालें? DX फाइंड कर लेते हैं। Let's do that here first. DX vector, that's going to be OX minus OD. Let's evaluate that. OX में से OD माइनस कर दें। 1 + 2 lambda minus -4, that's going to become, इसको मैं दो स्टेप्स में कर लेता हूँ। 1 + 2 lambda minus -4, that's going to be +4. 3 - lambda minus -1, मैंने OD सही लिखा है, -4 -1 3 आ रहा था। -4 -1, या मैं नीचे मैंने गलती से -3 लिख दिया। This should have been +3, है ना? This should have been +3. This is -4 -1 and +3. Yeah. अच्छा. 3 - lambda minus -1, that becomes 3 - lambda +1. And then 1 + 2 lambda -3, that becomes 1 + 2 lambda -3. Let's simplify this. And this gives us 5 + 2 lambda, 4 - lambda and -2 + 2 lambda. ये हमारे पास वेक्टर dx आ गया। This is the vector dx. And now we use the idea that dx and AB should be perpendicular to each other. If they are perpendicular to each other, तो क्या होता है? इनका dot product 0 होना चाहिए, right? तो 5 + 2 lambda, 4 - lambda and -2 + 2 lambda, dot product of this with AB. AB का position vector क्या था? It was 2 - 1 2. The dot product should be equal to 0. Now we solve this. Let's see what we get from this. 2 × 5 + 2 lambda minus 1 × 4 - lambda plus 2 × -2 + 2 lambda. That equals 0. That gives us 10 + 4 lambda minus 4 + lambda minus 4 + 4 lambda equals 0. And that's giving me 9 lambda. 10 - 8, that's 2. That goes to the other side and gives me -2. Lambda equals -2/9. That's the value of lambda that I'm getting from this. It's -2/9. It's a bit weird number at the end. Can somebody please just check the working? कोई error तो नहीं लग रहा कहीं पे? AB vector क्या रहा था? 2 1 - 2. Oh, what did I do there? OB minus OA. This should have been 2 1 - 2. Okay, so there is an error here. There's an error here. यहाँ पे AB जो था, this was actually 2 1 - 2. मैंने इसको गलती से -1 2 लिख दिया था. This should be 2 1 - 2. If that's 2 1 - 2, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 2 1 - 2. इक्वेशन असल में ये बननी थी. Okay, this should have been 2 1 - 2. और फिर उसकी वजह से ये नीचे एरर आ गया हमारा.
Yeah, this here should be 1 and -2. जब वो हमने चेंज किया, जब हमने ए बी यहाँ पे चेंज किया तो ओ एक्स भी चेंज हो जाना था. Okay, so we need to correct that as well. 1 plus 2 lambda, 3 plus lambda हो जाना था यहाँ पे, और ये हो जाना था 1 minus 2 lambda. Now, if that happens, यहाँ पे ये correct करना पड़ेगा. This becomes 1 3 plus lambda minus 1, and then we have 1 minus 2 lambda minus 3. That simplifies to 4 plus lambda here, and minus 2 lambda here. Let's correct that here now. 4 plus lambda, and this should be minus 2 lambda. Let's do the whole thing again. And that gives us 5 plus 2 lambda. Again, how am I figuring this out? कि कुछ गलत हो रहा है? Because the value of lambda that I'm getting at the end, that looks a bit weird. So that should raise alarms कि अच्छा कुछ गलत तो नहीं है. So फिर आप जाके verify कर लें एक दफा. 5 plus 2 lambda into 2 plus 4 plus lambda into 1 plus minus 2 lambda, that is multiplied to minus 2 equals 0. This gives me 10 plus 4 lambda plus 4 plus lambda plus 4 lambda equals 0. Now we've got 9 lambda plus 10 plus 4 plus 4, that's plus 18 equals 0. The value of lambda that I'm getting from this is minus 2. ये मेरे पास lambda की value आ रही है -2. Okay, what can I do with this value of lambda now? I can input it back in dx. इसमें dx में अगर आप input कर दें तो फिर dx का magnitude निकाल लेंगे और हमारे पास height आ जाएगी. ठीक है, let's do that. इसके अंदर input कर दें, dx क्या आ जाएगा हमारे पास अब? dx is going to be 5 plus 2 lambda, so that's going to be 5 plus 2 into minus 2, 4 minus 2, and minus 2 into minus 2. मैंने इसके अंदर यहाँ पे इनपुट कर दिया लैम्डा की वैल्यू dx के अंदर. Why? Because dx जब वेक्टर आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, we will get the height, वो डिस्टेंस आ जाएगा between parallel sides. Okay, what does this give me? That gives me 5 minus 4, that's 1, 4 minus 2 is 2, minus 2 plus 2 is also 2. This is dx. अब हम क्या करें? dx का मैग्नीट्यूड निकाल लें. What is that? That's 1 square plus 2 square plus 2 square, and this gives us 3 square root of that. ये आपके पास आ गया distance between parallel sides. ठीक है? This is distance between parallel sides. Distance between parallel sides. That's the first thing that you're asked about here. The second thing that you need to do here is you need to find the area of the trapezium. उसके लिए आपको क्या चाहिए? DC के लेंथ चाहिए और AB के लेंथ चाहिए. उनके मैग्नीट्यूड्स निकालने पड़ेंगे. DC और AB के. Okay, do we have the DC vector somewhere? मैंने find किया कहीं पर DC vector. DC. Yes, OD minus DC ऊपर किया था. That turned out to be अच्छा नहीं. उन्हें क्या था? OD minus DC. Yeah, but we know that's 3 times AB. ये हमें पता है यहाँ पे, तो एक निकाल लेते हैं. AB का निकाल लें. AB क्या था? AB वेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं. AB का मैग्नीट्यूड यहाँ पे साइड पे लिख लें. AB वेक्टर, what was that? That was 2 1 minus 2. 2 1 minus 2. That's the vector AB. इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर. AB का मैग्नीट्यूड में हमारे पास 3 आ गया. What about DC का मैग्नीट्यूड? हमें ऊपर उसने एक रिलेशनशिप बताया हुआ था. उसने बताया था कि DC is 3 times AB. तो बस उसकी लेंथ भी 3 टाइम्स हो जाएगी. आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. 3 into 3 and that gives us 9. ये आपके पास DC के लेंथ पे आ गई.
ठीक है, ये तीनों लेंस आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम that's half into height. Height is 3 into sum of parallel sides. एक side 3 है, एक side 9 है, and that's going to give you the result. 12 over 9 is 6. 6 into 3, that gives us 18. That's the area of the trapezium. All right. इस part में हमें ये find करना था, area of trapezium figure out करना था. We figured this out. ठीक है? That now this part was pretty complicated. Okay, not very complicated. आपको perpendicular distance सही तरह से निकालना आता है. So it's just that standard process, but इसमें careless errors काफी होते हैं. You just have to be careful about that. Like we just ended up doing here. हमारे वो careless errors हुए यहाँ पे. ठीक है? अच्छा, let's move on to the next one. That's the last question that we're doing. This is complex numbers. Let's think about this. We need to verify that this is the root of this equation. Verification कैसे करेंगे? आप इसके अंदर input कर देंगे. ठीक है, इसके अंदर input कर दें. And that's actually going to be pretty complicated. It's going to be pretty long. You can think if you can apply the polar form here, if you can use the polar form here, that might be helpful as well. Polar form अगर आप use करना चाहें तो कर सकते हैं. Let me think about that. Polar form हम यहाँ पे input करें. Yeah, that's actually going to be much quicker, I think. क्योंकि अगर आप -1 plus square root of 2 iota use करेंगे और इसके raised to power 4 करेंगे, you're going to get a lot of terms there. काफी सारी terms आपके पास आ जाएंगे वहाँ पे. ठीक है? So one idea is to convert it to polar form. और उसमें फिर क्योंकि power से evaluate करना is relatively easier, that might be quicker. Let's just try that and see if that takes us anywhere. इसमें exact हमारे पास आएगा angle कि नहीं आएगा? That's also a problem actually. Exact हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा? Tan of theta is going to be minus square root of 2. Polar form में convert करने के लिए यहाँ पे मसला ये होएगा, हमारे पास exact answer नहीं आएगा. Yeah, so okay, exact नहीं आता तो हम generally avoid करते हैं. We are not going to do that. Let's do it the usual way. इसको input कर दें -1 plus square root of 2 iota whole raised to power 4 plus 3 into -1 plus square root of 2 iota whole raised to power 2 plus 2 times z plus 12 equals 0. ये evaluate करना है, इसको prove करना है कि left side आपकी 0 बन जाती है. Expand करना है, सब कुछ cancel out हो जाना चाहिए. ठीक है? How do we do this now? Power 4 को कैसे evaluate करें? One idea is that you can convert it to you can use the binomial formula. वो आप कर सकते हैं. But another idea that might be plausible here would be that you can say ये square आप evaluate कर लें, इसको दोबारा इसका square कर देंगे, you'll get raised to power 4. इसको अलग से evaluate कर लें, वो कर सकते हैं. That might be helpful. Square को evaluate अलग से कर लें आप पहले. ठीक है, उसको directly वहाँ पे input कर देंगे फिर. -1 plus square root of 2 iota का whole square. Let's evaluate. ये क्या हो जाएगा? -1 का square using a plus b whole square, -1 whole square plus 2 into a, that's -1, into b, that is square root of 2 iota, plus b ka square, that is square root of 2 iota whole square. ठीक है? What does that give us? That gives us 1 plus, in fact, -1 minus 2 into square root of 2 iota plus 2 iota square. अब iota square क्या होता है? Iota square -1 होता है. So it becomes 2 square root of 2 iota minus 2, and we get -1 minus 2 square root of 2 iota. Again, you've got to be careful about careless errors here. यहाँ पे होते हैं, उनका बस ध्यान रखना है that you're not doing them. ये आपके पास square आ गया. अब ये square को जाके वहाँ पे input कर देते हैं. जब raised to power 4 है, we can actually break it down into 2 squares, right? इसको हम 2 squares में break कर सकते हैं. You can say this is -1 plus square root of 2 iota के whole square and -1 plus -1 plus square root of 2 iota का whole square plus 3 into -1 plus square root of 2 iota का square plus
2 into -1 plus square root of 2 iota plus 12 equals 0. अब ये देखिए जो नीचे स्क्वायर एवेल्युएट किया था हमने, ये जाके वहां पे इनपुट कर देते हैं। -1 -2 square root of 2 iota into -1 -2 square root of 2 iota plus 3, अब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है, it's going to be -1 -2 square root of 2 iota, और जो बाहर वाली टर्म्स इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 plus 2 square root of 2 iota plus 12 equals 0. Let's simplify everything now. -1 into -1 is going to give us +1. -1 into -2 square root of 2 iota, that's +2 square root of 2 iota. And then -2 square root of 2 iota into -1, that's again 2 square root of 2 iota. Plus this term and this term, when they get multiplied, we're going to get 8 iota square, right? 2 into 2, 4. Square root of 2 into square root of 2, 2 aa gaya. 4 into 2, आपके पास 8 आ जाएगा, 8 iota square. Then we have -3 minus 2 into 3, which is going to be 6, square root of 2 iota, -2 plus 2 square root of 2 iota plus 12 equals 0. That's the expansion that we're getting here. Now let's simplify things. हमारे पास क्या क्या आ रहा है? You see, you've got square root of 2 iota here, you've got plus square root of 2 iota here, you've got plus 2 square root of 2 iota here, 6 हो गए, और ये minus आ गया, all of them get cancelled. ये चारों आपके cancel हो गए, ठीक है? अच्छा, what are we left with? We're left with constants. उनको simplify कर ले, 1 plus 8 iota square था, 8 iota square negative हो जाएगा, -8 हो गया, -3 -2 plus 12 equals 0. You add all of these things up, that gives you 0 on the left side. ये आपने verify कर लिया that this thing is a root of this equation. ठीक है? That's what we had to do here. ये आपने verify कर लिया that this turns out to be a root. Okay? क्योंकि आपकी equation satisfy हो रही है when you input that root in the equation. Let's move on to the next part now. Now it says find the other roots of this equation. That's the last part that we're doing now. Find the other roots of this equation. अच्छा, आपको एक तो पता है, जब भी आपके पास कोई polynomial होता है और उसके coefficients real होते हैं, roots, अगर कोई complex roots आते हैं, they always occur in conjugate pairs. They always occur in conjugate pairs. तो अगर एक रूट आपके पास ये है -1 plus square root of 2 iota, एक रूट तो आपको पता है और क्या होएगा, एक रूट आपके पास हो जाएगा -1 minus square root of 2 iota. That's another root that we've got. That's the conjugate of the first root. ठीक है, ये एक रूट आ गया हमारे पास. अब बाकी रूट्स आपको फाइंड करने हैं. अब इसका क्या प्रोसेस होता है? Let's think about that. एक रूट ऊपर लिखा हुआ था पहले, वो क्या था? That was -1 plus square root of 2 iota. ये दो हमारे पास रूट्स थे. एक तो आपने इसको ये रूट बता दिया, एक additional. Now it's z power 4. So there are going to be two other roots. We've got to figure them out. अब क्या करेंगे इसके लिए? अगर ये दोनों रूट्स हैं तो उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? एक फैक्टर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट साइड से. That's going to be z plus 1 plus square root of 2 iota. This is one factor. एक फैक्टर वहां से आएगा z plus 1 minus square root of 2 iota. These are two factors that we've got. Okay? Again, how do we get them? Remember, जब आपके पास अगर ये factors होते थे real terms के अंदर x equals 2 हो और एक x equals -4 हो, factors क्या हो जाते थे? x minus 2, ये 0 एक साइड पे आपने इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. You write it like this. You say x minus 2 equals 0. This is x plus 4 equals 0. एक factor आपका x minus 2 है, दूसरा factor क्या है? x plus 4. That's exactly what we're doing here. जिस तरह real numbers में करते हैं उसी तरह यहाँ पे कर रहे हैं. We're saying if these are two solutions, if these are two roots, we can say z plus 1 plus square root of 2 iota equals 0 and z plus 1 minus square root of 2 iota equals 0. दो factors आपके पास ये आ गए, एक ये factor है, एक ये factor है. इन दोनों का multiply कर दें, you're going to get one quadratic factor. इसको multiply करते हैं, it's going to be a relatively complicated multiplication because 9 terms आ जाएंगी, but you have to do that.
z into z, that's z square. Z into 1 plus, that's 1. No, 1, z into 1 is z. Z into minus square root of 2, that's going to be minus square root of 2 z iota. Achha. Then the next term, 1 into that thing, z plus 1 minus square root of 2 iota, and then square root of 2 iota multiply hoga plus square root of 2 z iota plus square root of 2 iota, and we have minus 2 iota square. ये आपके पास इसकी एक्सपेंशन आ गई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, square root of 2 into square root of 2, that's 2, and then iota square. Let's simplify this. When we simplify this, you'll see iota वाली terms should cancel out. Let's see if they do. ये और ये cancel हो रहे हैं, और ये cancel हो गए, ठीक है। iota वाली terms cancel हो गई, iota square रह गया, उसको तो हम convert कर देंगे real में. So it becomes z square plus z plus z plus 1 minus 2 iota square, that becomes plus 2. ठीक है, iota square minus 1 होता है, minus 2 plus हो जाएगा. You get one factor, one quadratic factor, that's z square plus 2z plus 3. ये आपका एक फैक्टर आ गया क्वाड्रेटिक. अब क्या करना है, आपको बाकी रूट्स निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। डिवीजन कर लें आप. यू गॉट मल्टीपल मेथड्स फॉर दिस. आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना चाहते हैं वो कर लें, आप लॉन्ग डिवीजन करना चाहते हैं वो कर लें. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी ओके.